Hello, Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the yet another Sehat Hour, which is organized by Sehat Kahani for everyone to get to know about important health challenges that we are facing and to get advice from the experts. Today, we are going to talk about the rise of Omicron. एंड इस सेगमेंट का मकसद ये है कि जो नया वेरिएंट कोविड का वापस हमारे मुल्क में आया है उसको लेकर जो है वो ज़हनी तौर पर हमें किस तरह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ तरह के लोगों को एंड हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं तो कौन से ऐसे इफेक्टिव टूल्स स्ट्रैटेजीज टिप्स हैं जिनसे जो है वो हम कोविड की इस रीसर्फिंग से बेहतर तरीके से कोप अप कर सकते हैं सो टुडे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वासे who is a consultant psychologist, clinical psychologist at Sehat Kahani. He has been associated with us for a long time. Dr. Vase, if you can introduce yourself to our audience. अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस मेरा नाम अब्दुल वासे है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और करंटली आई एम डूइंग रिसर्च इन द यूके on clinic in the field of clinical psychology regarding eating disorders and how they affect us and what are the causes. So that's what I'm doing, and I have been associated with the Sehat Kahani for like several years, just like Yusra told us. And today we'll be discussing the after effects of COVID and about the resurgence of new variants which may affect of our lives in the future. So Right. So, Dr. Vase, to start off the conversation with something very basic. When COVID emerged in 2020, हमने एक द न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बिठा लिया था. हम वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हो गए थे. हमारी एकेडमिक्स, हमारी इकोनॉमी एक मरहले से गुजरी थी और हमने उसे कोप अप करने का एक सर्टन तरीका इख्तियार कर लिया था. आफ्टर अ वाइल हम एक रूटीन में सेट हो गए थे और उसके बाद जो है वो कोविड आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और हम फिर से एक और नए नॉर्मल पर शिफ्ट हो गए. बट नाउ दैट अ न्यू वेरिएंट इज रीसर्फेसिंग, वी आर somewhere in the middle. So do you think कि इस सारे जो है वो सिचुएशन से हमारी मेंटल हेल्थ पर या जो हमारी डेली रूटीन है उस पर कोई असर पड़ा है? exactly, that's a good question, and that depends on our resilience, because some people have more resilience and some people they don't have that amount of resilience. क्योंकि क्या होता है जब भी कोई effect आता है, whether that's a disaster like a volcano or a war or a famine or pandemic, तो हमारा वो एक टेस्ट होता है. And some people they may fail their test because कोई भी इशू हो, वी नीड रिसोर्सेज, और ह्यूमन टेंडेंसीज लाइक दैट कि हम लोग अपनी जो भी रिसोर्सेज होती हैं वी डोंट सेव इट एंड वी यूटिलाइज इट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब भी कोई ड्रास्टिक इस तरह का इशू आता है तो व्हेन वी आर लेफ्ट इन हॉट वाटर्स. एंड सेकेंडली, जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो it induces fear in us. There are two things which motivates human beings, fear और hope. आजकल जो हमारा पैराडाइम है या 15-20 साल से पैराडाइम रहा है स्कूल्स के अंदर, पैटिंग स्टाइल्स के अंदर, वो फियर कर रहा है ये करोगे ये हो जाएगा, खौफ से जो है ना हमसे काम करवाते हैं. तो इट मे बी हेल्पफुल इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन पीपल गेट एजिटेटेड और वो जो है फिर उनका जो इरेगुलर इरेशनल बिहेवियर होता है वो सामने आ जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर like issues which are most important to them, और वो trivial issues के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से they might be at a loss in their academic aspects, vocational and professional domains, या फिर उनकी personal life affect होना शुरू हो जाती है. Because simply put, they don't have the resources, whether those are financial resources, mental or physical resources. क्योंकि जो pandemic है वो physically भी हमें affect करता है. We'll talk about that later. You can ask me the question specific to that. It affects us mentally. ठीक है, जब हम mentally ठीक नहीं होते तो हम दूसरी चीज, life की दूसरी चीजों के ऊपर फोकस उस तरीके से नहीं कर सकते as
we can, like before the pandemic hits or any other disaster hits. And thirdly, the financial aspect, जो कि जिसको मैं बहुत ज़्यादा importance देता हूँ, और I'll give you an example later on during the session कि वो कितनी ज़्यादा importance रखती है, और हमें अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट किस तरह सिखानी चाहिए और अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह मैनेज करना सिखाना चाहिए, बिकॉज these two things, these affects us the most, क्योंकि if we are not emotionally connected, तो what happens is that कि हम लोग जो हैं irrational decision या ऐसी बात कर देते हैं जिससे दूसरे के ऊपर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, and that aggravates the issue at hand. So yeah, that's it. So it's very interesting that you mentioned कि एक फियर और होप का एलिमेंट है हमारी हर तरह की जो है वो अपब्रिंगिंग कन्वर्जेशंस के अंदर। सो जब कोविड हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा था तो हमने देखा था कि लोगों के पास वो उम्मीद वापस आई थी कि अब हम अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस जा सकते हैं। अब हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो फिर से बेहतरी की तरफ जा सकती है। और जब ये वेरिएंट वापस आया है और फिर से एक एक्सट्रीम लेवल पर कोविड केसेस कराची में आप देखें, इस्लामाबाद में देखें, every fifth person in Islamabad is a COVID positive right now. So do you think that this has diminished their spirits to work for something better or to cope up better? Mm-hmm. Uh, we can say that, like in economics, there are no guarantees. In life, there are no guarantees. हमें uncertainty के लिए ready हमेशा रहना चाहिए. We have to be prudent about that. Some people, yes, they do got vaccines. They got the measures in place in order to reduce or avoid the impact of this COVID-19. लेकिन क्या होता है कि the vaccines, they are not perfect. So sometimes we may get affected, like after we have got vaccines. तो एक wrong paradigm जहन में उभरता है कि हमारे तो हमने तो हर measure ले लिया था, लेकिन फिर ये कैसे हो गया? तो we life is very uncertain, future is very uncertain, and we tend to have a tendency to be perfectionist. हम लोग चाहते हैं कि बस एक चीज अब हो गई तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे, एंड इसको अब हम जो है ना बैक बेंच के ऊपर या बैक बर्नर के ऊपर डाल देते हैं. तो like everything, life is a set of challenges. जो ये pandemic है, it's also a set of challenges. ये different waves में आता है. It affects us differently because if we are living in Africa, it might be very different because of different availability of resources. In Western countries, they have resources as well in place, but they were affected very badly. In Pakistan, yeah, we were like fortunate enough कि हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, but we had this paradigm कि हम लोगों के अंदर जो है ना blame का एक वो होता है कि we tend to blame. और दूसरी चीज ये है कि हम जिस तरह साइकोलॉजिकली देखें, हमारी सबसे बेसिक बिलीफ होती है कि to earn money or to get food to feed our family. We think कि हम लोग कोरोना से नहीं तो भूख से जरूर मर जाएंगे, and that's the case across the globe. So we want jobs, we want work, we want money. So that is the reason कि हम लोग इस चीज को ignore करते हैं. And yeah, I can empathize with those people because they are earning money, halal money for their people. But indirectly, what they do, like they get exposed to these viruses and they later on transfer these to other people who are vulnerable. So हम लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं. तो we have to चेंज आवर थिंकिंग पैटर्न कि फर्स्ट परफेक्शनिज्म को खत्म करना है कि एक चीज हो गई तो हमें ये नहीं देखना है कि वो 100% ठीक है. इवन द बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, दे ऑलवेज से कि वी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम 99.9% ऑफ द जर्म्स बट नॉट 100%. 100% is not present here. It resides with the supreme power, right? Our creator, our God, Allah Ta'ala. ठीक है, एक इस चीज को बदलना है. दूसरे हमें जो है ना, we have to be careful. अगर हम अपने साथ careful नहीं हैं and we are trying to make ends meet for our family, we should think of the other people as well कि वो लोग शायद उस चीज से बचना चाह रहे हैं because they might have different disorders जिससे उनके immune system compromise हुआ हुआ है, उनके बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, या कोई ऐसी issue है जो जिससे वो बचना चाहते हैं. तो
we because we are social, we intermingle quite a lot, और उसकी वजह से जो है वो ये केसेस बढ़ जाते हैं. एंड समटाइम्स लाइक यू सेड कि ओमिक्रॉन की रिसर्जेंस हुई है पाकिस्तान के अंदर, सो दैट्स लाइक traveling, और sometimes हमारा जो लाइक इंटर कंट्री का जो केसेस होते हैं, वी डोंट नो बिकॉज द साइंटिस्ट, द डॉक्टर्स, दे आर वर्किंग हाउ इट री इमर्जेस, बिकॉज वो स्पेसिफिकली नहीं कि सिर्फ एक ही रीजन से अराइज हो. इट माइट म्यूटेट, इट माइट बी प्रेजेंट इन सम पीपल, देन इट माइट म्यूटेट इनटू द ओमिक्रॉन वेरिएंट. So we are not sure about that. So in summary, we have to be careful. We don't have to be perfectionist, because in life there are no guarantees, in future there are no guarantees. So we have to anticipate and prepare for it. So preparation is the key. हम लोग जब किसी चीज के लिए prepare नहीं करेंगे basically, तो I'll give you an example. A squirrel, he or she saves nuts and stuff for the upcoming winter, because अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो इंटेलिजेंस दी हुई है, बिकॉज ही और शी नोज कि सर्दी आएगी तो बाहर जो है फूड स्टफ नहीं होगा, और मुझे मुश्किल का सामना होगा, एंड आई माइट एंड अप डेड. सो ह्यूमन शुड लाइक लर्न फ्रॉम दैट बिहेवियर कि वो कुछ अपना एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व, फाइनेंशियल रिजर्व या इस तरह की चीज रखें कि ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स they can use it, and we have to be rational in that. हम लोग यूजली द ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट कि हम लोग जो है मतलब ज्यादा खाते पीते हैं और हमें अच्छा लगता है, बिकॉज इट गिव्स अस प्लेजर, एंड दैट्स अनदर टॉपिक. क्योंकि जब हम अच्छी चीज खाएंगे या कोई मजे की चीज खाएंगे तो डोपामीन विल बी रिलीज, एंड इट गिव्स अस a sense of like confidence and self esteem. हमें अच्छा लगता है because dopamine is the happiness neurotransmitter. So for the short term हम अपने गम को भुला देते हैं ये काम करके, because that's the only thing allowed. So yeah, that's it. In summary, we have to be financially prudent, we have to be prepared for the worst case scenario, and that takes time. So that's it. Yes. So, what I hear you saying is that to keep that hope alive, to keep that spirit alive, we have to also be very vigilant. We don't have to, put our faith in the oblivion कि जो होगा देखा जाएगा, एंड देन जब हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो तो हमने उसके लिए कोई तैयारी ना की हो. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स इट. बट समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल हमारे डिफरेंट हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे इस सेशन के अंदर, कि कौन से फोकस्ड वी कैन से कि एरियाज ऑफ फियर्स एंड एंजाइटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो जब कोविड रीसर्फेस हुआ है तो स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह की बेसिक फियर्स और एंजाइटीज पाई जाती हैं, और इनके साथ कोप अप कैसे किया जाए. फॉर एग्जाम्पल आई एम a student and I wanted to apply for an international master's degree, but now with COVID coming in again, I might have to study online, which I do not want to, and it is inciting some anxiety, some fear in me, or a lot of students who are stuck abroad and they want to come back home. So these are what are the other challenges and fears that students are facing, and what are few basic tips or things that they can hold on to cope up with those anxieties. Exactly, a wonderful question, or very uh, close to our society. असल में क्या होता है, because what we learn in the universities, I'm talking about the undergrad and postgraduate individuals, हम लोग प्लानिंग तो पढ़ लेते हैं, बट हम उसको अप्लाई नहीं करते. व्हाट वी लर्न वी डोंट अप्लाई. सिंपल प्लानिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, तो हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स नहीं रखते. हमारा सिर्फ एक गोल होता है, एंड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, के एक सिंगुलर उसके ऊपर जो हमने है गोल के ऊपर फोकस करना है. एंड जरूरी नहीं कि हम एक ही यूनिवर्सिटी जाके कामयाबी हासिल कर लें, जरूरी नहीं हम एक ही
करियर या प्रोफेशन के अंदर जाके कामयाबी हासिल कर लें कि वेदर वी कैन बी अ डॉक्टर और एन engineer or a lawyer or a chef or something, जरूरी नहीं, because we have like different traits and different attributes in our personality, तो हम कोई second best option भी choose कर सकते हैं. And regarding different students, some students yes they have ambitions कि हमें इस यूनिवर्सिटी जाके ये काम करना है, अपने करियर को इस तरह फर्दर करना है, and that like puts an obstacle over there कि अब आप travel नहीं कर सकते, even if you want to travel the budget goes up and you can't afford it, ठीक है. तो that's one part. There are some students who think कि चलो अच्छा है कोरोना आ गया और अब हम जो है ना मतलब हमें छुटकारा मिल जाएगा, because they are not interested in theoretical study. They might be like they might be into sports, क्योंकि उनके अलग traits हो सकते हैं, because हम किसी को बुरा नहीं कह सकते. They might be good at sports, they might be good at technical work, they might be doing like something being self-employed or something. So उनके लिए काफी अच्छी चीज होती है. And for some like chaos creates opportunity, तो बहुत सारे लोगों के लिए इस चीज के अंदर फायदा भी होता है, ठीक है, because Yeah. they have Yeah. time to introspect and they have time to think, और वो फिर जो है उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं. तो वी हैव लाइक मल्टीपल सिनारियोज. कुछ लोगों के लिए वाकई में मुश्किल होती है, मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज लाइक हम फिक्सेटेड स्टक हो जाते हैं किसी एक चीज के ऊपर. हमने करना है तो यही करना है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और हमने यही करके दिखाना है, बिकॉज we have to prove something to our peers or to our elders or someone. So my advice or my thinking is that कि हमें we shouldn't be putting our eggs in one basket. और जितने भी स्टेक होल्डर्स मैंने बताए हैं, 3 या 4 कि डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे शुड ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट, वो अपने अंदर झांक के देखें कि हमें क्या करना चाहिए. हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ऑल्दो द केओस इज swirling अराउंड अस, कोविड है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, बट वी हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. तो उसमें जो प्लानिंग के 6 पार्ट्स होते हैं वो अप्लाई करें एंड सी व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स व्हाट वी कैन डू, बिकॉज आफ्टर ऑल दे वुड बी ऑन देयर ओन फीट, दे विल बी इंडिपेंडेंट. तो वो हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते. और अगर उनको कोई इशू होता है तो देन वी आर हियर लाइक experts at Sehat Kahani. They can always contact us and we'll be happy to help them in their career. We can act as their mentors or career counselors. So that would be a good thing, because seeking help is the best coping mechanism. अगर आपसे नहीं हो रहा, we understand. Yes, no one is built in with the capacity to help themselves all the time. That's why humans are interdependent. So they can connect with us, they can connect with their teachers. So ask for advice कि आगे हमें क्या करना चाहिए, and that's the solution for that. Yes, yes, and I can completely understand when अभी हमारी जो education system है उसके अंदर भी एक rift था, right? When the academics went online, a lot of students were, you know, there was there was different kind of responses to these situations. And what we as a community, we need to understand that students a should be given this facility from their education institutes, a pathway where they can connect to mentors and guides and experts to guide them on according to the situation. And I think कि अभी बहुत सारे ऐसे schools और institutions हैं भी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए well-being counselors रखे हैं. But again, that comes from mostly privileged institutions. But I think yes, channels are available for anyone who wants to seek help, and that's what students need to be motivated for, that it's okay to feel overwhelmed and it's okay to feel all the fears and anxieties, as long as you don't let them take away your hope and take away your spirits. So Dr. Vase, ये तो हमने students की बात की, but what about I would I would like yes. to add one thing. हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, या हमारा जो थिंकिंग पैराडाइम है ऑफ आवर पेरेंट्स और द डिसीजन मेकर्स और द पीपल हु आर पोजीशन इन पावर, वी थिंक जो थियोरेटिकल और एक जो करियर बेस्ड पढ़ाई है कि हम इंटर ओ ए लेवल्स वगैरह करके बैचलर्स और वो करें,
we really don't have to do that. हमें कुछ ना कुछ ऐसे individuals भी चाहिए who know the skilled work, like welders, plumbers, carpenters, electricians, like electronic mechanics. उनकी बहुत ज़रूरत होती है। और मैं कोविड के ज़माने में डिफरेंट कंट्रीज में गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, बिकॉज आई वाज लाइक इन द मेडिकल फील्ड, सो आई वाज अलाउड टू गो। सो उन लोगों की डिमांड हमेशा ज्यादा थी, बिकॉज दे आर लाइक कंसिडर्ड एसेंशियल वर्कर्स। फॉर एग्जांपल, घर में पानी का नल का टूट जाए, पाइप खराब हो जाए, वी विल ऑलवेज कॉल द प्लम्बर, इवन इट्स कोविड और नॉट, एंड दे विल कम। बिजली चली जाए, कोई मसला हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, वी हैव टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो स्किल्ड जो फील्ड है उसको भी हमें ऑप्ट करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें सिर्फ जो है डिग्री लेनी चाहिए, because we have to focus on the practical aspect as well. That's why दुनिया जो है, because we need janitors, we need scientists, we need everyone has to play their part. लेकिन हम लोगों का Yes. एक thinking होती है कि no, just the theoretical and career based education. So uh, that Yes. might be a good thing, but that's not always the correct thing. Yes, yes. And it's also, I think, थोड़ा सा जो है वो हमारे टॉपिक से थोड़ा सा जो है वो हम दूर चले जाएंगे, मगर इट्स एन इम्पॉर्टेंट थीम दैट यू आर डिस्कसिंग, दैट द रिस्पेक्टफul careers and the pressure that our students go through to become doctors and engineers, and one very specific careers that we think are the bright careers or are the respectful careers, and the others we do not acknowledge them as respectful or as ambitious. So that is one thing that our educational system and our society as a whole, we need to reconsider what we call success for our students. Dr. Wasid, the next question that I have for you is about a community which is not often acknowledged as important stakeholders of the society, and these are our homemakers. Stats show that our housewives, homemakers, they went through a lot of struggles during the lockdown. There was a lot of responsibility on their shoulders because they had to serve all the people who were at home at one time. They had to take care of their kids taking online classes. They had to take care of their husbands who were taking online meetings. And then we also saw unfortunately, a surge in domestic violence and abuse cases. So, what do you think that this, again, the resurfacing of virus, does it has any impact on the mental health of homemakers, or the pandemic or quarantine itself? Do you think that it impacts the homemakers, and if they are alone at any point during the lockdown, what are the few things that they can take up to take care of their mental health? Hmm. That's a good question, because, like you said, these are most like ignored or overlooked people in our society, और हम उनकी जो issues हैं वो कभी limelight के अंदर नहीं लेके आते. First of all, scientifically, if people are living in like close quarters, और जैसे बड़े शहर हो गए, टोक्यो हो गया, जकार्ता हो गया, कराची हो गया, मुंबई हो गया, when we are living in very close knit society, crime rates, abuse, these things increase. और कोविड की वजह से हम एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहे हैं, देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और उसके साथ साथ जो है डिफरेंट पर्सनालिटीज, सो दे क्लैश टुगेदर. सो दैट माइट बी अ नेचुरल थिंग. वी कैन सी इट एनिमल किंगडम, वी आल्सो आर सीइंग इट इन ह्यूमन बिहेवियर एज वेल, कि जब हम ज्यादा करीब करीब रह रहे होते हैं तो always there is an issue which is not liked by one person, the other person tries to defend it or becomes angry. And for them, the first thing is that कि हम उनको जो है मतलब mindfulness या communication skills सिखाएं, like how to be assertive, not to be passive or aggressive, because that may lead to a problem which was not there in the first place. क्योंकि हम लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं जो दूसरा एंटिसिपेट नहीं करता, and we tend to lash out. So that's one of the things. Second thing is that के हाउस मेकर्स के ऊपर वाकई बर्डन था, बच्चों की क्लासेस लेनी है, बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, और उनको एक टाइम के
ऊपर जो है हमें कंप्यूटर के सामने वो रखना है ताकि टीचर से वो क्लासेस ले सकें. देन दे हैव टू कुक फॉर देयर इनवैलिड रिलेटिव्स. किसी के घर में डायबिटीज हो सकती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको टाइम पे मेडिकेशन देनी है. देन they have to look after their husbands who are also going through hard times, क्योंकि कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, उनकी जॉब चली जाए या ना चली जाए, ठीक है ना. और जो है दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो एक डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट है और उनको Yeah. खुद से उस एनवायरनमेंट में एसिमिलेट होने में टाइम लग रहा है. सो दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स in the society. So, for the housemakers, what they can do for catharsis, they might talk to someone who understands them, who is not judgmental, क्योंकि वो अपनों से बात करेंगे, although अपने are very good, but they just sometimes being judgmental, कि वो जो है मतलब बताते नहीं, कुछ नहीं होता, they say just ignore it, या वो उसको minimize कर देते हैं या maximize कर देते हैं. Those are like cognitive errors or thinking errors in themselves. और साथ में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और इट morphs into something bigger. तो उनको जो है हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि देयर आर सम इंडिविजुअल्स whom यू कैन आस्क फॉर हेल्प, कि हमें ये किस तरीके से इशू सॉल्व करना है. क्योंकि व्हेन वी आर इन अ प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट, तो हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है वो सही से काम नहीं कर रही होती. वी डोंट टेक लॉजिकल डिसीजंस, वी आर जस्ट बीइंग इम्पल्सिव और इंटुइटिव, और जो दिल में आता है वो हम काम कर लेते हैं. तो दैट इज द सेकंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि हमें मतलब प्रायोरिटाइज नहीं करना आता. मतलब जो हाउस मेकर्स हैं, दे हैव टू सेट अप हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज, के पहले बच्चों को देखना है या अपने इनवैलिड्स को देखना है या अपने हस्बैंड को देखना है. सो दे कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, कि कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर है और उस प्लान के ऊपर उन्होंने चलना है. इफ दे आर अनप्लान, के एक टांग यहाँ रख दी, एक टांग यहाँ रख दी और सबके लिए करें, a man or a woman who tries to please everybody pleases nobody. तो हम सबको Yes. खुश नहीं कर सकते. There will be someone else in the world who will be unhappy with you, and that's normal. ठीक है. और दूसरी चीज, गुस्सा आ जाना, it's a natural thing, that's acceptable. लेकिन बदतमीजी करना, that's in our control. So we have to tell them what is anger and what are bad manners. तो हमें उन दोनों चीजों को जब हम differentiate कर लेंगे, then we will be able to live नॉर्मल लाइव्स. क्योंकि हम कभी गुस्सा कर जाते हैं या बदतमीजी कर जाते हैं, एंड दैट थिंग इंटरमिंगल्स, और हमें नहीं पता होता कि हमने क्या किया, और उसके रिजल्ट में हमें जो है ना फिर मुश्किलात का सामना होता है. सो दैट इज वन ऑफ द कोर इश्यूज विच आई आइडेंटिफाइड, बिकॉज आई लिव हियर इन द यूके, एंड देयर वर लाइक डोमेस्टिक अब्यूज केसेस, वेदर वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल. तो हम उनको यही चीज बता रहे थे कि व्हाट आर गुड मैनर्स, bad manners, and what is anger, and what is acceptable, and what is not acceptable. So yeah, Right. that's So it. you were saying that जब हम when we are giving these we can say that advice to the housemakers, it's important that their partners are also guided on how to coexist, right? How to learn tolerance, how to see that we respect each other's priorities. Because, and also I would like you to comment on when a housemaker is, irrespective of their gender, we have seen that a lot of men also stay at home, take care of the families while the women go work. So housemakers do not is not restricted to any particular gender, in my question at least. So when you talk about the priority list, where should self be a priority? And how to take care of your own self while you are taking care of so many other people at the same time? Yeah, that's a nice thing, because initially you mentioned housemakers as housewives. So the males, they have two tasks. Like in our community, Pakistan, India, Bangladesh, it is assumed कि जो male है वो breadwinner है. Usually it's changing in urban areas. वहाँ दोनों लोग कमाते हैं, females and males. But in most other part of the country, it's just the male, और उसके ऊपर काफी ज्यादा burden होता है. And we don't have the data from there, but usually वहाँ abuse के cases जरूर आते हैं. Hello, can Yes, you hear I can me? hear you, Dr. Vasi. Yes. Yeah, because my videos is stuck. So yeah, so what I was saying कि उनको भी एक hierarchy list बनानी चाहिए, and they have to be compassionate to their partners, कि वो उनके लिए बहुत कुछ कर रही है,
or they have to listen to their like issues or things they have to say, so there is better communication. जब तक communication नहीं होगी, that is the second part जो मैंने पहले mindfulness और communication skills का बताया था, there have to be proper communication कि दूसरे बंदे की क्या needs हैं, वो क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है, उसकी basis के ऊपर आप decision. So we have to be compassionate to each other, empathize with each other, be communicative with each other. And a woman who's a housekeeper should know that her husband is also going to through a tough phase. We don't know, life is very uncertain, job se kab nikal diya jaye, at least he's doing something. And about the males, the spouses, the male spouses, they might also think कि हमारी wife जो है वो बच्चों को देख रही है. They might also be caring for the invalid relatives like her mother-in-law, father-in-law, or other people. So that's one thing. तो दोनों को जो है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है इसलिए कि दे शुड शेयर द बर्डन्स लाइक फिजिकल, फाइनेंशियल और इमोशनल. एंड इफ देयर इज अ गैप इन दैट और इफ देयर इज लैकिंग इन दैट, सो वो रिलेशनशिप नहीं चल सकती. और कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, अनलेस वी शेयर द बर्डन विद ईच अदर. मैं किसी काम में अच्छा हूँ, मेरी वाइफ किसी काम में अच्छी है, ठीक है, मैं किसी काम में बुरा हूँ, so we can take up our places in our Yes. workplace as well. Sometimes I'm good at one thing, the other, my colleague, one of my colleagues, he or she is good at one thing, so we take or exchange our duties, or we empathize with them. Even consoling words, they play a good part in uplifting the morale and self-esteem, because all of the things that matter is the self-esteem and confidence. क्योंकि जब आपके ऊपर इतना सारा burden होता है and we don't find any positive feedback from anywhere, then we fall into despair, then into depression. So that's how these disorders go. Right, right. So, Dr. Vase, that does make a lot of sense, and I think when it comes to partnership, any kind of partnership, even if it's between the relationship of parents and children, children and their grandparents, communication and affirmative, positive communication is the key that we can manage our relationships in these stressing times very positively. डॉक्टर वासे, आपने बात की सेशन की शुरू में ही कि हम जब कोविड के दौरान हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया था, तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। मगर अब 2 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कोविड को 1 साल हो गया है। और हमारी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, हमारी जो फाइनेंशियल कम्युनिटी है, वो फिर से डिस्पेयर के अंदर है। सो जब कोविड बेहतर हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही जो है वो हालात फिर से थोड़े अनसर्टन होने लगते हैं, हम फिर से एक डिस्पेयर की सिचुएशन में चले जाते हैं। सो अभी जो हमारी इकोनॉमिक कम्युनिटी है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, एंड इट कैन बी वेरिएंट अकॉर्डिंग टू कि एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी और बड़े से बड़ा जो हमारा फूड बिजनेस ले लें या एग्रीकल्चर बिजनेस ले लें, everyone is suffering yet again. So what do you think are the basic reasons for it, and how can we prepare? आपने बात की कि हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें मेंटली, इस चीज को आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं when you have years and years of conditioning that you have to spend, how to how to switch yourself to the spendthrift mentality? अगर आप इस पे थोड़ी सी बात करें. Uh, well, that's a difficult question because it relates to different fields: economics, business, psychology, and philosophy. And there are other cultural challenges as well, क्योंकि different cultures में जो है different expectations होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी के ऊपर, जब ये इशू आया ड्यू टू कोविड, तो most of them might have taken loans, most of them might have taken something from others in order to increase their business, और वो लोन पे नहीं कर सके. They might got some relief for 1 or 2 years, but still the loan was present. और जब आपके ऊपर एक डेमोक्लेस की तलवार लटक रही होती है, because it's always there, so we are in always in a state of worry and anxiety.
ठीक है। तो द लोन्स वर स्टिल देयर, ठीक है, हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल गया, थोड़ा सा लोन में कमी आ गई, बट द लोन वाज स्टिल देयर एंड दे हैव टू रीपे इट। और इन द कोर्स ऑफ दीज 2 years इतनी ज्यादा सेल, इतनी ज्यादा स्पेंडिंग नहीं हुई जितनी वो एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि अ बिजनेसमैन, ही और शी एंड बिजनेस पर्सन, ही और शी एंटिसिपेट्स के जो है, मैं अगर इतना स्टॉक रखूंगा तो ये इतने अरसे तक बिक जाएगा एंड आई विल मेक दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड आई विल री इन्वेस्ट इट और वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई ऑल्सो सेड के हम लोग प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन जब इस तरह का चैलेंज आता है तो दोज प्लान्स लाइक गो ऑरी, ठीक है। तो दूसरा था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग कोई चीज मंगवाते हैं और वो चीजें टाइम पे नहीं पहुंचती एंड वी मेक अ लॉस एट थिंग्स, क्योंकि हमारे पास वो इन्वेंट्री में चीजें ही नहीं है। शिपिंग लाइंस वर ब्लॉक्ड due to COVID, airline operations were suspended. So the things, the goods, they were not coming in. The factories, most of the factories in developed areas, I'll say, I don't know about Pakistan क्योंकि मैं उस time पाकिस्तान में नहीं था. They were closed. It might have been closed in Pakistan as well, like big textile industry in Pakistan. तो कोविड की वजह से उसके ऊपर भी इफेक्ट जरूर आया होगा. सो दीज थ्री थिंग्स के जो है ना, हम लोन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लाइक एंटिसिपेटिंग कि हम बाद में उसको रीपे कर देंगे. देन वी डोंट एंटिसिपेट कि अगर कोई इशू आ जाए तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन की लाइंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे अफेक्ट होगा. हमें जरूरी नहीं कि जो हम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है. तीसरी चीज जो है, जो सप्लायर्स हैं वो खुद दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, क्योंकि दे डोंट हैव एनी like sources of income for themselves, वो भी लोन लेते हैं and they have to supply other people and they get paid for it. So it all revolves around money कि जो है ना, किसने किसको पैसे देने हैं, जब वो पैसे आएंगे then they will proceed. So that's it. And secondly, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के, जब इस तरह का इशू आता है और हमारे इतने ज्यादा पैसे स्टेक पे लगे हुए होते हैं, बिकॉज दैट्स लाइक अ रिस्क टेकिंग वेंचर, ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो रिस्क टेकिंग होती है. इट्स जस्ट लाइक what we can say in other terms, अगर कोई गैम्बलर है या किसी ने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो he or she will feel in a similar way, क्योंकि उसके पैसे स्टेक के ऊपर हैं. तो There then is a develop trend. the, yeah, then it develops the like case for mental health issues, किसी को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंड कमिंग बैक के डोमेस्टिक अब्यूज, बिकॉज दे वांट टू डिस्प्लेस देयर एंगर. अब वो किसी थर्ड पर्सन जो तीसरे कंट्री के अंदर बैठा हुआ है सप्लायर, उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकते. एंड सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट दे डू, वो अपना गुस्सा अपने बच्चों, अपने घर वालों पे निकाल देते हैं एंड दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ दिस एंड इट बिकम्स अ विशियस सर्कल. उसको कोप करने के लिए ये चाहिए, मतलब ऑल्दो आई माइट बी लाइक नॉट अ ट्रू बिजनेसमैन, लेकिन हमें जो है अपनी जो लोन लेने की कैपेसिटी या हमें कहीं से कुछ चाहिए तो वो हम कम से कम रखें, बिकॉज द बेस्ट थिंग इन ह्यूमैनिटी इज इंडिपेंडेंस. अगर आप किसी से लोन ले लो या किसी से कोई उधार या किसी से कोई मतलब एहसान ले लो, देन यू बिकम डेटेड टू देम, और आप उनके एक तरह से स्लेव हो चुके होते हो. एंड यू, इफ यू आर इंडिपेंडेंट, आपने किसी से कुछ नहीं लिया हुआ, देन यू विल बी स्ट्रांग एंड यू विल हैव लेस mental physical issues as compared to people who have taken those loans. और thirdly क्या होता है कि जब हम इस तरह की कंडीशन में होते हैं, वी टेक अप फॉर लाइक मैल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स. कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई ड्रग लेता है. सो जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, उनकी चांदी हो जाती है, क्योंकि if it's a good economy is going good, people are spending on these negative coping mechanisms, smoke कर रहे हैं, alcohol ले रहे हैं, drug ले रहे हैं. If it's like a bad, poor state of economy, they are still spending on these things, तो उनकी तो चांदी हो रही है और वो they are earning money, ठीक है, क्योंकि these things never stop. So और lastly they have to diversify. जिस तरह मैंने कहा कि yeah, having a business of their own is a good thing, बट हैविंग अ स्किल कि चलो अभी कुछ नहीं आ रहा लेकिन हमारे पास ये स्किल है, हम थोड़ा सा छोटा सा कोई और दूसरा बिजनेस खोल लें फॉर टाइम बीइंग, और जो है ना खाना वगैरह बेचते हैं, कोई ऐसा काम कर लें. तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की. वी डोंट हैव टू पुट our eggs in one basket. We have to be like prudent and like intelligent about how to like make decisions. So that's it.
No, that certainly does make a lot of sense, and you have given some very important suggestions. One of it being open-minded towards our investments and towards our business options, and that is one very strong suggestion that we can consider. A lot of times, we are so focused on one thing that we lose sight of all the other opportunities that are opening their doors for us. So it's for sure a very positive outlook. It gives hope instead of a despair, instead of ke kuch bhi nahi hua, sab khatam ho gaya. So that kind of it takes you out of despair. So Dr. Vase, I think we have the last 2-3 minutes. So how would you like to summarize the fear and anxiety situation? आई वुड से कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस बारे में कर रहे हैं, या हम किस तरह से जो है वो इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी जो अनसर्टनिटीज़ हैं, it's uncertain. We do not know what will be the COVID case after 1 month. We do not know what will be its situation after 6 months. It's uncertain, and uncertainty is scary. So how can we effectively, as a community, as a nation, we can deal with that? जिस चीज की दुनिया में और इंसानियत में कमी है, वी हैव टू रिवर्ट बैक टू इट, लाइक कंपैशन एंड एम्पैथी, क्योंकि आजकल वी आर मोस्टली सेल्फ Yes. सेंटर्ड और अपना ऊपर फोकस करते हैं, वेदर वी आर इन अ रिलेशनशिप, हमारी फैमिली है लेकिन हम अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, देन वी टेंड टू द नीड्स ऑफ अदर्स. दैट्स मोस्ट ऑफ द पीपल बट नॉट ऑल द पीपल. आई एम सेइंग, आई एम नॉट जर्नलाइजिंग, but compassion and empathy is lacking in current world. Materialism, that is on the increase. That's why we have these problems, क्योंकि हम अपना पैसा, अपने hard earned money easily, क्योंकि उसको कमाने में हमें टाइम लगता है, खर्च करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता. वी हैव टू बी मोर सेंसिबल ऑन हाउ वी स्पेंड, वेयर वी स्पेंड, एंड लाइक व्हेन वी स्पेंड. सो दैट्स इट. और हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए कि हमारा गोल क्या है. पैसे तो आ रहे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू सेव, हाउ टू यूटिलाइज दैट मनी सो वी कैन यूज इट लेटर ऑन अगर कोई मुश्किल आ जाए, ठीक है, उसके अंदर. Third thing is that if you are overburdened with issues related to your financial aspect or your mental health or your physical health, then the telemedicine professionals are here or other people are here. If you're spiritual, go to seek your spiritual guides. If you want to seek medical, psychological advice, you can come to us, because sharing the burden is like अगर मैंने 10 ईंटें उठाई हुई हैं, I've taken on 10 bricks and there's my friend, I'll ask him, can you help me with this? तो वो अगर 5 ईंटें उठा लेता है, तो I'll be less burdened. So that's like emotional and physical burden. अगर हम किसी से अपनी problems आके share करते हैं, तो we share our emotional burden, और हम फिर easily और अच्छे से decision ले सकते हैं, क्योंकि if we are burdened, then we can't do anything. Like उसकी example एक छोटी सी गाड़ी की तरह है, 800 या 600 सीसी गाड़ी. अगर आप उसके ऊपर ज्यादा बर्डन डाल दोगे तो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं चलेगी. बट वी हैव टू शेयर द बर्डन विद समवन हु नोज हाउ टू डील विद इट, एंड वी कैन टीच देम वेज, लाइक मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स हो गए, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स हो गए. तो उनसे आप गाइडेंस लें कि हम इस मुश्किल वक्त में हैं, हमें क्या करना चाहिए. सो दे कैन ऑलवेज सीक एडवाइस फॉर अस इन टर्म्स ऑफ मेंटल health and physical health. So that is the thing, and we have to be compassionate and empathetic to others and to their spouses and their family members. So that will create but much more better world. So yeah, that's it. And you're very right, Dr. Vase. This is a world of fast-paced. हम बहुत जल्दी जल्दी जो है वो नए challenges देख रहे हैं, और उन challenges से निपटने के नए तरीके भी निकाल रहे हैं. But one thing that remains constant is the human connection, is the message of kindness, and it's supporting each other, and also realizing and acknowledging that you need support. It's also acknowledging that you can share your burden with someone that you trust. And I think that is something that very important that came out of this session. So thank you so much, Dr. Vase, for taking out the time for us. Thank you so much, everyone in the audience who is listening to us. I hope कि
ये जो एक अनसर्टनिटी का फेज है वो जल्द ही हमारे मुल्क के लिए खत्म हो, हम फिर से एक सेहतमंद मुल्क की तरफ वापस लौटें और हम उससे लर्निंग्स लेकर लौटें। हम उससे जो है वो और बेहतर बनाने के तरीके लेकर जो है वो एक हेल्दी सिचुएशन की तरफ वापस जाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। Thank you, Yusra. Have a good day. Assalamu